So transpiration में things that you need to remember, first is cobalt chloride paper का color. So when it is dry, it is blue in color. When it turns moist, it is pink in color. Anhydrous calcium chloride का change. Anhydrous calcium chloride does not show any color change. It increases in weight after the experiment. The role of this polythene bag is to prevent the moisture from the soil from condensing inside the bell jar. The control for this experiment, you have to remove this plant and you can replace the entire setup without a plant. The role of this bell jar over here is to capture moisture that is present. The observation in the experiment is droplets of water are seen condensed on the inner surface of the bell jar. The aim of the experiment could be to show that aerial parts of the plant lose water in the form of water vapor during the process of transpiration. The definition of the process being loss of water in the form of water vapor from the aerial parts of the plant. Maximum amount of transpiration taking place from the stomata. Remember that, do not confuse yourself. Stomata is minute openings which are located on the epidermis of the leaf. Function of stomata is exchange of respiratory gases by diffusion. So we saw that various observations, bell jar hoga to droplets of water condensed on the inner surface, cobalt chloride paper hoga to it will turn from blue to pink, anhydrous calcium chloride hoga to pre-weight will increase in weight. Remember that it does not change in color. Then roll of polythene bag or the paper bag which was covering the pot, ye wala jo tha, it is to ensure that the moisture from the soil does not evaporate, condense and interfere with the result. Control mein same setup without the plant. Then give reasons mein xerophytes have leaves which are modified to spines. Xeros is basically dry, phyta is plants. So plants growing in drier areas are plants which have lesser amount of water. This is the leaf that is there and this is the spine that is there. The surface area decreases. Once the surface area decreases, the amount of water lost by transpiration also decreases. So one of the ways by which transpiration can be reduced is by converting of leaves into spines or by reducing exposed surface area or by shedding of leaves or by rolling of leaves. Then the other give reason is well-watered plant is seen to wilt during midday. Wilting is basically drooping. Pani nahi hai. Pani nahi hai matlab pani has been lost. Water is lost. You can see wilting in one more case, no, when xylem has been removed. Absorption वाले chapter में, girdling experiment में, अगर leaves droop कर रहा है, that means xylem has been removed. अगर leaves turgid है, that means xylem is intact. So when a well-watered plant is wilting during midday, that means that the rate of transpiration has exceeded the rate of absorption of water. Okay. Then three types of transpiration. The one that happens from the stomata, which is the stomatal transpiration, which is maximum. बस इतना ही याद रखना and do not confuse yourself with what is second, what is third. Stomatal transpiration is maximum. From where does it happen? It happens from the stomata, which is minute opening on the leaf epidermis. Lenticular transpiration happens from lenticels, which are permanent openings on the bark of old woody stems, and cuticular transpiration occurs from the cuticle, which is a waxy layer on the leaf epidermis. Another way to reduce transpiration is thicker cuticle. Example, banyan. Thicker the cuticle, lesser the rate of transpiration. Difference between stomata and lenticel is stomata is open during the daytime, closes during the night time, while lenticels are always open. The second difference obviously is that stomata is located on the epidermis of the leaf and lenticels are located on the bark of old woody stems. Then we moved ahead. We had seen, we also told ourselves किसी भी structure का function transpiration नहीं होता. Stomata and lenticel दोनों का common function होता है, which is exchange of respiratory gases by diffusion. And cuticle में prevent नहीं होता. Prevent की जगह पे we will write reduce. Then this is the second experiment that we saw, wherein we saw there's a dicot leaf. A dicot leaf was identified by reticulate venation. Dono side pe we put a cobalt chloride paper. A dicot leaf is also called as a dorsiventral leaf, where the dorsal surface is the upper surface, the ventral surface is the lower surface. Lower surface पे ज़्यादा stomata होता है, तो ज़्यादा transpiration होता है. It turns blue to pink faster as compared to the upper surface, which has lesser stomata, so less transpiration takes place from it. Then you have a glass slide which is placed. Remember, the glass slide is to ensure that the atmospheric moisture does not turn the cobalt chloride paper pink. What will be the observation in this experiment? The cobalt chloride paper placed on the ventral surface of the dicot leaf will turn blue to pink faster as compared to the cobalt chloride paper which is placed on the dorsal surface of the leaf. Why? Because there are more stomata on the ventral or the lower surface of the dicot leaf as compared to the upper surface that we had done. So you can see the reticulate venation.
It's called as a dorsiventral leaf Sir. because dorsal is the upper and ventral is the lower. क्या हुआ बच्चा? सर एक जनरल डाउट था हमारे स्कूल में बाद में पूछो. At the end, dorsal surface is the upper surface and ventral surface is the lower surface. The lower surface of a dicot leaf will have more stomata. Monocot leaf में there is equal number of stomata on both the surfaces of the leaf. Okay, ये observation था और reason था which we already discussed. Then what is the use of transpiration to the plant? First is it produces a cooling effect. Cooling effect, why? Because the water to evaporate takes heat from the plant. Second is whenever water is lost, it creates a suctional force. That suctional force was called transpirational pull. Transpirational pull was one of the factors which was responsible for ascent of sap. Remember, ascent of sap is upward rise of water and minerals in xylem. Ascent of sap के लिए root pressure responsible होता है, adhesion cohesion responsible होता है, capillarity responsible होता है और transpirational pull responsible होता है. Then we saw the diagram of the stomatal apparatus to label, obviously because you can see there is an inner wall of the guard cell. These structures are guard cells. Guard cell का ये जो अंदर वाला structure है, this is the thick inner wall of the guard cell. This is the opening. The opening is called stoma. The stoma is surrounded by the guard cells. The stoma is also in the leaf epidermis, surrounded by the guard cells. The guard cells are also in the leaf epidermis, surrounding the stoma. The bigger circle or the bigger dot that is there is the nucleus. The smaller one is the chloroplast that is there. The chloroplast basically help in photosynthesis. Because the chloroplast is there, the process of photosynthesis takes place. That is what helps in the opening and closing of the stomata. So we've seen the location. You should be thorough with the labeling. The inner wall, the thick inner wall, the thin outer wall, the smaller dots are the chloroplast. This one is the vacuole that is present over here. And the surrounding cells are the epidermal cells. This is the diagram of the stomatal apparatus. Then we move down. We saw the board question in relation to the stomatal apparatus, wherein the thin outer wall of the guard cell was labeled and the stoma was labeled. This entire structure is called the stomatal apparatus. The guard cell regulate the opening and the closing of stomata by changes in turgor pressure. Two structural features of A. So two structural features of A mein what will you see? Structural features mein you will see thick inner wall, thin outer wall, thick inner wall, thin outer wall. And the second one that you see is presence of large number of chloroplast. Okay. Where is the structure found in the leaf? The structure will be found in the epidermis in the leaf. Then we moved on. That's an expected question to label. Then we moved on to see this one. A similar one had come last year also. Mercury ke rise wala experiment. The mercury ka rise wala experiment is basically showing how transpirational pull is able to pull mercury upwards also, mercury being much more denser as compared to water. So the arrow basically shows upward rise of mercury, but in case of plants, it basically corresponds to upward arrow, na? So ascent of sap or upward movement of sap. That is what you have to look at. And the tissue that is being showed is xylem because ascent of sap. Sap is water and minerals. So that basically moves in xylem. This is another board question wherein you had a proper bell jar wala process being studied is transpiration. Then the definition, which is loss of water in the form of water vapor from the aerial parts of the plant. यहाँ पे rubber sheet से cover किया था ताकि moisture from the soil does not evaporate and condense. Any two external factors which can accelerate the process. तो खाली तीन ऐसे factors हैं जो inversely proportional है, बाकी सारे directly proportional है. Inversely proportional वाले CO2 concentration increase होगा, तो transpiration decrease होता है. That you can think of. Atmospheric pressure increase होएगा तो transpiration decrease होता है. And तीसरा humidity increase होगा तो transpiration decrease होता है. So any two external factors which increase the temperature, more the temperature, more the transpiration because warmer air can hold more moisture as compared to air which is at lower temperature. या फिर you could have the other factor which is wind velocity. Wind velocity increase होएगा तो moisture laden air will quickly be replaced by dry air. That could be another factor which is increasing. Or you could have intensity of sunlight because the stomata will be wide open, so more transpiration can take place. Then adaptations and drawing a diagram, obviously drawing ka tumko tension nahi hai. Methods by which transpiration can be reduced is leaves modified to spines and thicker cuticle. Thicker the cuticle, lesser the rate of transpiration. Then we move ahead to methods which we've already discussed. Thick cuticle, example, banyan, leaves modified to spines. When leaves are modified to spines, it reduces the exposed surface area we discussed.
हाँ, sunken stomata में नीरियम का example is a board question. This diagram was asked, not exactly directly, but they had asked the location of palisade parenchyma. तो अगर कोई dicot leaf है तो सबसे पहले क्यूटिकल है, क्यूटिकल के नीचे ये आपका जो लेयर है ये अपर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस के नीचे there is a layer, the entire layer, this one here, which is arranged at right angles to the upper epidermis, that is the palisade layer. The one which is below it, this one over here, this is the spongy layer, which has got air spaces that are present in between, and this in the middle is the vascular bundle, which is xylem and phloem. So they had asked, I think, palisade ka location. So palisade ka location will be between the upper epidermis and the spongy. If they ask you spongy ka location, then it will be between the palisade and the lower epidermis. But ये dicot leaf का है, monocot leaf का नहीं है. Monocot leaf में you will not see a distinguishing between palisade and spongica layers. Okay, that's your dicot leaf. Then your logical sequence, as we were seeing. So logical sequence में xylem से पानी निकलेगा. It will go into the mesophyll cells. Mesophyll cells से निकलेगा. It will go into the intercellular spaces. Intercellular spaces से जाएगा substomatal space और substomatal space से जाएगा stoma, which is the opening of the stomata. फिर ये वाला डायग्राम अगर रूट्स नहीं है तो ट्रांसपिरेशन है, और अगर रूट्स है तो अब्सॉर्प्शन है. यू विल सी जिसमें ट्विग है उसमें there will be a fall in the level of water because this twig will lose water by the process of transpiration, due to which more water will be absorbed from the test tube and the level of water will fall in this test tube. इसमें प्लांट नहीं है तो लेवल ऑफ वाटर सेम रहेगा, और ये जो ऑयल है दैट विल प्रिवेंट सरफेस इवेपोरेशन. ये जो पूरा सेटअप बी है ये एक्चुअली कंट्रोल सेटअप है टू कंपेयर द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट. देन गटेशन, जिसका वन ऑफ द कॉजेज वाज इंक्रीज्ड रूट प्रेशर, अब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में किया था. इंक्रीज्ड रूट प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गटेशन, which is the loss of water in the form of water droplets from hydrathodes. Hydrathodes कहाँ होते हैं? So hydrathodes are in the margins of the leaves, you can see. So ends of veins of leaves or margins of the leaves. All those conditions which favor guttation inhibit transpiration. अगर transpiration नहीं हो रहा है, plant में ज़्यादा पानी है, it has to lose that water, so it will lose it in the form of guttation. Bleeding is because of injury, so there will be loss of cell sap from the ruptured or injured parts of the plant. जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि तीनों लॉस है, ट्रांसपिरेशन भी लॉस है, गटेशन भी लॉस है, ब्लीडिंग भी लॉस है. बट ट्रांसपिरेशन में वाटर है, गटेशन में वाटर ड्रॉपलेट है, और ब्लीडिंग में सेल सैप है. ब्लीडिंग होने के लिए देयर इज एन इंजरी दैट नीड्स टू बी देयर, नहीं तो ब्लीडिंग विल नॉट बी देयर. देन वी मूव्ड ऑन टू कंडीशंस. एज वी डिस्कस देयर आर 3 कंडीशंस व्हिच आर इनवर्स. ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, ट्रांसपिरेशन कम होगा बिकॉज द एयर इज ऑलरेडी सैचुरेटेड. उसके अलावा CO2 कॉन्सेंट्रेशन, एक सेकेंड, इनवर्सली सॉरी, यहाँ पे CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा मोर देन 0.03%, इट विल कॉज पार्शियल स्टोमेटल क्लोजर, ट्रांसपिरेशन कम होगा. ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, ट्रांसपिरेशन कम होगा क्योंकि एयर इज ऑलरेडी सैचुरेटेड, लेस वाटर विल बी लॉस्ट आउटसाइड. प्रेशर, एयर विल ऑलवेज मूव और वाटर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर. तो जितना कम प्रेशर बाहर होगा उतना ज्यादा पानी बाहर जाएगा. बाकी ऑल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. टेम्परेचर बढ़ेगा, ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा बिकॉज द एयर इज वार्मर, वार्मर एयर कैन होल्ड मोर मॉइस्चर. इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट बढ़ेगा, ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा क्योंकि डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होगा. फॉगी डे पे कम ओपन होगा तो लेसर ट्रांसपिरेशन होगा, क्लाउडी डे पे कम ओपन होगा तो लेसर ट्रांसपिरेशन होगा. विंड वेलोसिटी बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा बिकॉज मॉइस्चर लेडन एयर विल बी क्विकली रिप्लेस्ड बाय द ड्राई एयर. फिर इंटरनल फैक्टर्स में एक ही सिक्का था, वाटर कंटेंट इन द लीफ. कम पानी होगा तो प्लांट विल्ट होगा, ट्रांसपिरेशन कम होगा, या फिर लॉस ऑफ टर्गर प्रेशर होगा तो स्टोमेटा विल नॉट बी ओपन, जिसकी वजह से भी ट्रांसपिरेशन कम होगा. देन वी सॉ द Genong's spotometer. दिस इज अ बोर्ड क्वेश्चन डायग्राम ओनली. In this, there is a reservoir. The reservoir is used to send the bubble back to the starting position to restart the experiment or to reset the apparatus. This is the leafy shoot or the twig that you introduce that does not remain alive for long. So that's one of the drawbacks of the apparatus. The other drawbacks being that the rate of movement of the bubble is affected by changes in external conditions. Then the setup does not measure transpiration, but instead it measures the amount of water uptake by the plant. And the most common one, that it is difficult to introduce a bubble. What is the apparatus measuring? So it measures the amount of water uptake, which is approximately equal to water lost by transpiration.
What phenomenon can it be used to demonstrate? Transpiration. So you can use it to measure transpiration, but it is actually measuring the amount of water which is lost, which is taken up by the plant. Rate of movement of bubble is equal to the amount of water absorbed, and that is approximately equal to water lost by transpiration. You should cut the shoot under water so that water bubbles are not introduced. The water over here is colored so that the movement can easily be seen. So if you see, yeah, that's how the apparatus looks. It measures amount of water uptake. Use of the reservoir is to push the bubble back to the starting position. This can come as a diagram-based question. It's already a board question. If you see your board questions, you will see. And roll of bubble, rate of movement of bubble is equal to water uptake, which is approximately equal to water loss. Limitations we have seen, process being studied is transpiration. Then the other way to measure transpiration is to see whether there's a loss in weight. There can be a fall in the level of water and there can be a loss in the weight of the apparatus. Like in this case, they have placed it over a weighing machine and they have shown that there's oil, there is water. So when you are seeing the process, then this is transpiration. See, had there been no weighing machine, we could have spoken about absorption. Okay, had there been no weighing machine, we could have spoken about absorption over here. But if you scroll down to the sub questions, you would see name 3 adaptations to overcome the process mentioned in 1. You don't have adaptations to overcome absorption. So it's basically talking about transpiration only, but the way to find out was the weighing machine. So जब वो twig lose करेगा पानी, it will absorb more water. When it will absorb more water, the weight of the setup will decrease. Oil हमेशा जहाँ पे भी added है, that will prevent the loss of water by evaporation. Humid condition में जब आप रखोगे तो level of water को क्या होगा? तो humid condition से रखोगे तो transpiration कम होगा. Transpiration कम होगा मतलब lesser fall in water level या slower fall in water level, whichever is there in your option. Windy conditions में रखोगे तो transpiration ज़्यादा होगा. तो greater fall in water level या faster. Whatever you can find in the options. 3 adaptations to overcome: sunken stomata, seen in Nerium, leaves modified to spines, and thick cuticles, seen in Banyan. And then guttation, which is loss of water in the form of water droplets from hydrathodes located at margins of leaves. Okay, 1 minute. After the weight one, I think that was the last one. Oh, this one. This one, which you'd already seen the smaller version of it, but this was the board question that you'd seen. So there's a twig that is placed over there. There's a glass tubing and you will see rise of mercury. The twig will lose water by transpiration. It will create a suctional force, which will lead to the upward rise of mercury in the glass tube. So if you see, will the level of mercury in the glass tubing rise or fall? It will rise because of the suctional force. And what tissue does the glass tubing represent? So it represents xylem. Then how will the rate differ if there is lesser humidity? Lesser the humidity, greater the transpiration. Higher the temperature, greater the transpiration. Two advantages: it creates a suctional force which leads to ascent of sap and it leads to cooling of the plant. Okay, sure. So then we can move on to the next one, which is photosynthesis. Okay, so photosynthesis के equation से start करते हैं. तो 6CO2 12H2. पहले ये 12H2 है. In the presence of light and chlorophyll gives C6H12O6 6O2 6H2O. इस process में water oxidize होता है by the removal of hydrogen to give rise to oxygen. Oxygen evolved in photosynthesis comes from water. So the MCQ would be oxygen evolved in photosynthesis comes from, so it comes from water. It actually comes from photolysis, which you will see. So photolysis of water होता है. और ये जो CO2 होता है, ये reduce होके बनाता है glucose. तो जो CO2 का ऑक्सीजन है, वो ग्लूकोज का ऑक्सीजन है. और जो वाटर का ऑक्सीजन है यहाँ पे, वो ऑक्सीजन का यहाँ पे. ठीक है? What kind of process is it? It is anabolic. Anabolic का मतलब क्या होता है? When simple substances combine to give rise to complex substances. This we've already discussed. Oxidized water होता है, reduced CO2 होता है, and oxygen evolved in photosynthesis water से आता है. क्या बनता है? Glucose बनता है. You can see C6H12O6. ये glucose transport करने के लिए sucrose में change होता है, और store करने के लिए it gets converted to starch, and it is insoluble basically. स्टार्च के बेसिस पे क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड, और यू शुड रिमेंबर कि ग्लूकोज से स्टार्च कैसे बनता है. ग्लूकोज से स्टार्च बनने वाले प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन बोलते हैं.
स्टार्च डिटेक्ट कैसे होता है? स्टार्च डिटेक्ट होता है स्टार्च टेस्ट से। कौन सा सोल्यूशन होता है? आयोडीन सोल्यूशन होता है। If starch is present and iodine is added, then bluish black. If starch is absent and iodine is added, तो brown या फिर yellowish brown. Starch test में क्या करते हैं? पहले you place the leaf in boiling water, which kills the cells. Then you put it in warm methylated spirit, which dissolves chlorophyll. Then you wash it in hot water or warm water, which softens the leaf, and then you add your iodine solution. How do you do the experiments there? Black paper रहेगा तो sunlight is required for photosynthesis is the aim. KOH, NaOH, soda lime रहेगा तो CO2 is required for photosynthesis. Variegated plant रहेगा, variegated मतलब green and non-green areas वाला रहेगा तो chlorophyll is required for photosynthesis. Aquatic plant दिखेगा तो aquatic plant या फिर inverted funnel या फिर test tube दिखेगा तो oxygen is evolved during photosynthesis. Snail in test tube दिखेगा तो they're trying to test the respiration वाला concept. Snail respire करेगा, CO2 produce करेगा. जितना ज्यादा CO2 होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा, उतना ज्यादा ऑक्सीजन बबल इवॉल्व होगा. माउस इन बेलजार होगा तो दे आर ट्राइंग टू टेस्ट वेदर द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स कि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट. These 6 एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स, ये सबसे पहले वाला था. कैंडल है, बेलजार है, माउस है. The mouse dies, there is no oxygen क्योंकि the burning candle uses the oxygen and the mouse also uses the oxygen. फिर वहां पे ग्रीन प्लांट रख दिया तो इट कंटिन्यूज टू बर्न क्योंकि ऑक्सीजन मिलता है बाय फोटोसिंथेसिस एंड इसको भी ऑक्सीजन मिलता है बाय फोटोसिंथेसिस, सो द माउस आल्सो सर्वाइव्स. दिस वाज द फर्स्ट वन. उसके बाद द स्नेल इन द बेल जार, द स्नेल इन द टेस्ट ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट. बी में यू कैन सी मोर नंबर ऑफ बबल्स. मोर नंबर ऑफ बबल्स मतलब मोर फोटोसिंथेसिस. क्यों हो रहा है ज्यादा? क्योंकि ये स्नेल रेस्पायर कर रहा है. रेस्पिरेशन से वो स्नेल क्या कर रहा है? बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन द स्नेल इज प्रोड्यूसिंग CO2. जितना ज्यादा CO2 उतना ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. उसके बाद द नेक्स्ट वन इज द ब्लैक पेपर वन. ये वाला लीफ के ऊपर ब्लैक पेपर रखा है. In that particular region they have put a black color paper. In that particular region they have put a black color paper. तो अगर ये लीफ है और अगर ये वाले रीजन में ब्लैक कलर का पेपर रखा है तो ये रीजन को सनलाइट नहीं मिलता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ग्लूकोज नहीं होता, स्टार्च नहीं होता. तो द कवर्ड एरिया विल टर्न ब्राउन आफ्टर द स्टार्च टेस्ट एंड द अनकवर्ड एरियाज विल टर्न ब्लूइश ब्लैक आफ्टर द स्टार्च टेस्ट. किसी भी एक्सपेरिमेंट को शुरू करने के पहले फोटोसिंथेसिस में यू टेक द प्लांट एंड यू प्लेस द प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 24 to 48 hours. This process is called destarching. You remove the starch from the leaves of the plant. The leaves is the marking word. So either it's the experimental leaf or it is the leaves of the plant. तो covered areas में देखो no sunlight, no photosynthesis, no glucose, no starch, turns brown. Uncovered areas में sunlight है, photosynthesis है, glucose है, starch है, it will turn bluish black. Okay, then this is the variegated leaf experiment. Variegated leaf का examples है croton, coleus, geranium. Sunken stomata का example था nerium. Thick cuticle का example था banyan. Aquatic plants that you can use will be vallisneria and hydrilla. So you can see there's a green color portion, there's a white color portion. Such leaves are Elodea. Yes, such green color and non-green color wala portion is a variegated plant. A variegated plant is a plant in which the leaves have chlorophyll. Certain parts have chlorophyll, certain parts do not have chlorophyll. The parts which have, the parts which have chlorophyll are green in color, and after the starch test, they will turn bluish black. Those which do not, after the starch test, will turn brown in color. Okay, so that was a simple one there. Variegated, non-variegated. We've seen pictures for variegated. Then this one, which was another board question, KOH दिख रहा है तो KOH दिख रहा है मतलब KOH क्या करेगा? KOH CO2 absorb करता है. KOH के जगह पे NaOH हो सकता था या सोडा लाइम हो सकता था. The part of the leaf which is inside the flask, the part of the leaf which is inside the flask does not get CO2. ये वाले part को CO2 नहीं मिलता. अगर यहाँ पे CO2 नहीं है तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता, यहाँ पे ग्लूकोज नहीं होता, यहाँ पे स्टार्च नहीं होता, तो this part will turn brown after the starch test. And this वाला part gets CO2. ये CO2 क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो KOH है ये CO2 absorb कर लेता है. That was the experiment for CO2. Starch test, experimental leaf या leaves of the plant? Starch test.
Experimental leaf या leaves of the plant. Experimental leaf या leaves of the plant दोनों साथ में नहीं आएगा. Experimental leaf is the most appropriate one actually then if you have it over there. You see an aquatic plant. This is normally asked to draw, but then if you are shown the experimental setup, then the aim of this setup is to show that oxygen is evolved during the process of photosynthesis. An aquatic plant is used. You could use Hydrilla or you could use Elodea. It's going to utilize the carbon dioxide from the pond water. It's going to do photosynthesis. There is the source of light. And these bubbles that you're seeing are bubbles of oxygen. The oxygen is going to collect over here. When you add sodium bicarbonate, okay, when you add NaHCO3 to this water, the NaHCO3 is going to dissociate. When the NaHCO3 is going to dissociate, it is going to produce more amount of CO2. More amount of CO2 means more the rate of photosynthesis. More the rate of photosynthesis matlab more the evolution of oxygen bubbles. Same snail वाला concept होता है. Distilled water use करेगा तो उसमें CO2 dissolve नहीं होगा तो photosynthesis हो नहीं पाएगा. Sodium bicarbonate वाला I just told you. Then structure of chloroplast again was asked to draw, but you can see the structure for a labeling diagram. Chloroplast is a plastid. It's a cell organelle. It has its own DNA. It duplicates during G1 phase cell division mein, because it has its own DNA. Mitochondria and chloroplast duplicate during G1 phase. The chloroplast is present in multiple locations, one of which is guard cell of stomata, which we studied in transpiration. The second is in the palisade layer of the leaf, which again we saw there. The third location of chloroplast, apart from guard cells of stomata and palisade layer of the leaf, is the cytoplasm of the plant cell. That is also location there. You see it's a double membrane structure. There's an outer membrane, there's an inner membrane. This entire matrix inside is called as the stroma, S-T-R-O-M-A. If you remember, the stroma is the site of the light independent reaction. The light independent reaction is the dark reaction, which takes place in the stroma, which produces glucose that gets converted to starch by the process of polymerization. It is temperature dependent, enzyme regulated. You may see people using Calvin cycle for it. It is not that it takes place during night time. It is just that light is present or light is absent does not make a difference to it. Glucose is fixed over, carbon dioxide is fixed, glucose is reduced, and the ATP and NADPH, which is produced during the light dependent phase, gets utilized in the light independent phase. The light reaction takes place in the thylakoid or the granum. The thylakoid is the individual coin-like structure. The stack of thylakoids is called as granum, and they're interconnected by structures which are called as fret. So own DNA, double membrane filled with stroma, matrix of the chloroplast, thylakoid is flattened sac, stack of thylakoids is grana, and fret, which is also called intergranal lamellae because it connects the two grana. Chloroplast ka 3 locations, cytoplasm of plant cell from 9th standard, guard cells of stomata, and mesophyll layer of the leaf. Mesophyll layer matlab palisade and spongy दोनों होता है. ये वाला palisade होता है, so it is in between the upper epidermis and the spongy mesophyll. ये spongy होता है, so it is in between the palisade and the lower epidermis. फिर stoma और stroma का difference, STOMA stoma is the opening of the stomata. STROMA stroma is the matrix of the chloroplast. तो thylakoid के अंदर वाले wall पे chlorophyll होता है. Chlorophyll is in the inner wall of the thylakoid. वो क्या करता है? It traps sunlight for the process of photosynthesis. Chlorophyll को बनने के लिए magnesium लगता है. Magnesium is the mineral that is associated with the synthesis of chlorophyll. Chlorophyll maximum absorb करता है wavelength, तो वो red होता है. Red के अलावा blue होता है. वो green absorb नहीं करता, green reflect करता है, इसलिए green light use नहीं करना चाहिए. Chlorophyll को बनने के लिए sunlight लगता है. Sunlight is required for its synthesis. So grass growing in shade turns yellowish. So grass growing in shade turns yellowish because of non-synthesis of new chlorophyll and destruction of the older chlorophyll. Pigment होता है, gives color, reflects wavelength, not used, reflects green wavelength, not used in experiments. Blue and red wavelength maximum absorb होता है, 9 types का होता है, A universal होता है. Magnesium is associated with its synthesis.
Mg is present, सनलाइट लगता है प्रोडक्शन के लिए, ग्रास ग्रोइंग इन शेड टर्न्स येलोइश. लाइट इंडिपेंडेंट वाला मैंने आपको सिखा दिया. लाइट डिपेंडेंट वाला, लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल फेज हैपेंस इन द ग्राना और द थाइलाकोइड्स. 3 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप इज एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, सेकंड स्टेप इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड थर्ड स्टेप इज फोटोफॉस्फोराइलेशन. Activation of chlorophyll में, the chlorophyll which is present in the inner walls of the thylakoid gets activated by absorbing photons of light. Photolysis of water में photo का मतलब होता है light, lysis का मतलब होता है breakdown, और water, so water gets broken down under the influence of light. So 2H2O, 4 photons, 4H plus 4E and O2. O2 gets evolved. इसलिए लिखा था कि ऑक्सीजन इवॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर. ये जो H प्लस होता है दैट गेट्स एक्सेप्टेड बाय द हाइड्रोजन एक्सेप्टर व्हिच इज कॉल्ड NADP. NADP is nicotinamide adenine, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. Full form is important, ध्यान देना. NADP क्या होता है? NADP is the hydrogen acceptor in photosynthesis. तो ये बोर्ड क्वेश्चन था. ऑक्सीजन इवॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस कहाँ से आता है? ब्रेकडाउन ऑफ वाटर से आता है. ऑक्सीजन तो इवॉल्व हो जाता है, जो H प्लस होता है वो NADP एक्सेप्ट करता है. क्या होता है NADP? निकोटिनामाइड. ये N पूरा होता है, ये अमाइड वाला A नहीं होता. अमाइड ये एक पूरा वर्ड है, यहाँ पे एडिनाइन. डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. तो जब NADP एक्सेप्ट करता है तो हो जाता है NADPH. NADP is the hydrogen acceptor in photosynthesis. So what is photolysis? Again, that's a definition that you may see. Breakdown of water using photons of light into hydrogen, oxygen, electrons during light dependent reaction in the grana of the chloroplast. Then the third was photophosphorylation. Photo का मतलब होता है light, phosphor का मतलब होता है phosphate, rylation का मतलब होता है addition. So what are you doing? You are adding. What are you adding? Phosphate. To what? To ADP. DP क्यों? क्योंकि इसमें 2 फॉस्फेट है. इसको एक और फॉस्फेट ऐड करेगा तो क्या हो जाता है? ATP, मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. तो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट IP gives ATP. इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन. It is the addition of inorganic phosphate to adenosine diphosphate to produce adenosine triphosphate. और यूज क्या होता है यहाँ पे? फोटॉन्स ऑफ लाइट होता है. तो लाइट रिएक्शन जैसे जैसे एंड होता है तो उसके 3 एंड प्रोडक्ट्स होते हैं. एक तो ऑक्सीजन होता है जो इवॉल्व हो जाता है, दूसरा NADPH एंड ATP होता है जो यूटिलाइज होता है. डार्क रिएक्शन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बट दिस इज द क्वेश्चन दैट दे विल आस्क यू. पॉलीमराइजेशन से ग्लूकोज से स्टार्च बनता है. आई थिंक ऑल दिस वाज सिंपल दैट वी हैड कवर्ड. फिर अडैप्टेशंस टू इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में वो एक बोर्ड का गिव रीजन है. ग्रीन लीव्स आर थिन एंड ब्रॉड. थिनर द लीफ, lesser the distance between the cells, faster the transport, more the photosynthesis. Broader the leaf, more the surface area, more the surface area, more the rate of photosynthesis. So green leaves are thin and broad. उसके बाद अदर एडेप्टेशंस में एक्सटेंसिव वेन सिस्टम होता है जिसके वजह से रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस होता है. लीव्स अरेंज्ड एट राइट एंगल्स टू द सोर्स ऑफ लाइट होता है. The cuticle and the upper epidermis are transparent. The chloroplast is concentrated more in the upper layers of the leaf. All these are adaptations. So you can see extensive vein system, cuticle, upper epidermis transparent, and chloroplast is concentrated in the upper layers of the leaf. Those are all adaptations to increase the rate of photosynthesis. फिर factors affecting photosynthesis में temperature. Transpiration में temperature बढ़ेगा तो transpiration बढ़ेगा. Photosynthesis में temperature बढ़ेगा तो photosynthesis बढ़ेगा up to a particular range. उसके बाद it will fall down because enzymes will get denatured. For every 10 degrees centigrade rise up to the optimum temperature, the rate of the reaction will double, after which it will start falling, and at one point it will stop because the enzymes will get denatured. Okay, so that's your temperature wala idea. For every 10 degrees centigrade rise up to optimum, it will double. Very high temperature, photosynthesis will stop because all enzymes are proteins and they will get denatured. Light intensity and CO2 concentration के लिए same था. जैसे जैसे light intensity बढ़ेगा, rate of photosynthesis बढ़ेगा up to a certain point, then it will stabilize. जैसे CO2 concentration बढ़ेगा, rate of photosynthesis बढ़ेगा, then it will stabilize. At the point where it stabilizes, you can increase the other factors which are lesser in quantity to increase the rate of the reaction. तो जैसे आप खाली light intensity बढ़ा रहे हो, तो यहाँ पे अगर stable हो रहा है, अगर आपको ये पॉइंट पे और ज्यादा फोटोसिंथेसिस बढ़ाना है तो आप दूसरा कोई फैक्टर इंक्रीज करो, जैसे CO2 कॉन्सेंट्रेशन, तो वो इंक्रीज करके फर्दर स्टेबलाइज हो जाएगा. उसके बाद वाटर कंटेंट इन द सॉइल
एक्सटर्नल फैक्टर ना, सो वाटर कंटेंट इन द सॉइल, अगर बाहर सॉइल में वाटर कंटेंट कम है तो गार्ड सेल फ्लैसिड है, गार्ड सेल फ्लैसिड है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है। इंटरनल फैक्टर्स में क्लोरोफिल कम है, क्लोरोफिल क्यों कम है, मैग्नीशियम नहीं है, अगर या फिर सनलाइट का एक्सपोजर नहीं है तो क्लोरोफिल कम है, क्लोरोफिल कम है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम है। वाटर कंटेंट इनसाइड द लीफ कम है, अगर वाटर कंटेंट इनसाइड द लीफ कम है तो फोटोसिंथेसिस कम है। अगर ऑलरेडी प्लांट के पास काफी ग्लूकोज है तो वो और ग्लूकोज नहीं बनाएगा, तो एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लूकोज विल रिड्यूस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। Okay, so these are internal factors affecting the rate of photosynthesis. So cells can be of two types. You can either have somatic cells or you can have reproductive cells. Somatic cells वो होता है which are not concerned with reproduction. दो टाइप का सेल डिविजन होता है, एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिविजन which takes place in somatic cells. माइटोसिस से दो डॉटर सेल्स बनते हैं which are identical to the parent cell. The chromosome number of the daughter cell is equal to the parent cell. It is also called equational division. It helps in growth, repair, healing, reproduction in lower organisms. Takes place in the meristematic tissues in plants and in the growing regions of the plants. Meiosis is a type of cell division that takes place in reproductive cells. Meiosis produces 4 daughter cells which have chromosome number half of that of the parent cell. Hence, it is also called as reductional division. And meiosis helps in the process of gamete formation. एक टिपिकल एनिमल सेल को आइडेंटिफाई करते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोसोम. Centrosome is basically two centrioles surrounded by ray-like structures which are called asters. Asters से बनता है spindle fibers which help in the movement of the chromosomes. Thread-like structures in the nucleus are called chromatin fibers which thicken or condense during the process of cell division to form chromosomes. Chromosomes खाली cell division के time दिखते हैं. Chromosomes are carriers of heredity. This is a board question. Cell division seen only, cell component seen only during cell division. These chromosomes, there are 46 chromosomes or there are 23 pairs in humans. Of these 23 pairs, 22 pairs are autosomes and the 23rd pair that is there, it determines the sex of the individual. It is called as the allosome. Chromosome के ऊपर genes होते हैं. So genes are basically specific sequences of nucleotides which are located on the chromosomes. They code for a particular protein that expresses as a feature of the body. Once again, thread-like structures in the nucleus are called chromatin fibers. They thicken or condense during the process of cell division to form chromosomes. Chromosomes are carriers of heredity. They carry genes which are units of heredity made of DNA, which is deoxyribonucleic acid, which is also the chemical basis of life. Cell component seen only during cell division, chromosome. What makes up the genes? So DNA makes up the genes. Centrosome is only in the animal cell, so it's your identification of the animal cell. No above, below, it is located in the cytoplasm of the animal cell near the nucleus. So this is the nucleus near the nucleus. You can either have it as a dot in a line, or you can see two dots, or you can see two cylinders. Asters basically form spindle fibers. Duplicated chromosome में दो chromatid होता है. ये जो blue color वाला structure है, ये एक chromatid है, और ये वाला जो है, ये दूसरा chromatid है. They're held together at a point called centromere. यहीं पे spindle fiber भी attach होता है. So there are two chromatids. When the chromatids belong to the same chromosome, they are sister. When they do not belong to the same, they are non-sister. Non-sister आप सीखोगे जब आप पढ़ोगे crossing over. Crossing over is the exchange of genetic segments between non-sister chromatids of homologous chromosomes at the chiasma or the chiasmata, which is the point of crossing over. Crossing over meiosis में होता है. Crossing over की वजह से genetic variations मिलते हैं या genetic recombinations मिलते हैं. सेल डिवीजन के दो मेजर स्टेप्स होते हैं. पहला होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. कैरियन न्यूक्लियस होता है. साइटोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो कैरियोकाइनेसिस होता है. जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो साइटोकाइनेसिस होता है. साइटोकाइनेसिस अगर प्लांट सेल में होता है, साइटोकाइनेसिस व्हेन इट टेक्स प्लेस इन द प्लांट सेल, इट टेक्स प्लेस बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन. Cell plate formation starts in the middle and then it moves towards the outside like this. And जब karyokinesis animal cell में होता है तो it occurs by furrow formation. तो यहाँ पे एक depression, यहाँ पे एक depression. It will pinch and it will form two daughter cells. Mitosis में अगर क्रोमोसोम नंबर X है पेरेंट सेल का, तो डॉटर सेल जो दो डॉटर सेल्स बनते हैं उनका भी X होता है. This I have already discussed with you.
मियोसिस अगर ये X है तो 4 जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें X/2 होता है। अगर टेस्टिस में हो रहा है तो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हेल्प करेगा, ओवरीज में ओवम फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है मियोसिस, एंथर में पोलन ग्रेन फॉर्मेशन, पोलन ग्रेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव सेल इन प्लांट्स, एंड ओव्यूल फॉर्मेशन और एग सेल फॉर्मेशन। गेमीट्स मियोसिस से क्यों बनता है? क्योंकि अगर माइटोसिस से बनेगा तो क्रोमोसोम नंबर विल नॉट रिमेन द सेम or the chromosome number will not be maintained because it is formed by meiosis. The chromosome number becomes half and then it becomes combined again and it gives rise to the normal human chromosome number. Karyokinesis, which is division of nucleus, उसके खुद 4 steps होते हैं, prophase, metaphase, anaphase, telophase. Pro is पहला, meta is middle, ana is आधा and away, and telo is opposite of pro. प्रोफेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है, सेंट्रोसोम डुप्लीकेट होता है एंड द सेंट्रियोल्स मूव टू ऑपोजिट पोल्स. मेटाफेस में ऑल द एंड स्पिंडल फाइबर्स अपीयर. मेटाफेस में ऑल द क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेन. एनाफेस में सेंट्रोमियर डिवाइड होता है, क्रोमैटिड्स मूव टू ऑपोजिट पोल्स. टीलोफेस इज द ऑपोजिट ऑफ प्रो, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर होता है, क्रोमोसोम्स अनकॉइल करके क्रोमैटिन फाइबर बनाता है, spindle fiber disappear होता है. So if you see the normal structure in prophase, what you have to look for is the disappearing nuclear membrane. ये वाला जो blue color से I'm shading now, this is your identification feature. अगर ये दिखेगा तो prophase है, और अगर ये दिखेगा centriole and aster तो animal cell है. So और ये chromosome number है 1, 2, 3, 4. So this is basically prophase in an animal cell having 4 chromosomes. डिसअपियरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन का क्रोमोसोम, सेंट्रोसोम डुप्लीकेट करता है, सेंट्रियोल्स मूव टू ऑपोजिट पोल, स्पिंडल फाइबर्स अपीयर. They appear in prophase, they disappear in telophase. They disappear here in prophase, they appear in telophase. Same thing प्लांट सेल में करते हैं, खाली सेल वॉल ऐड करते हैं और सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल नहीं ड्रॉ करते हैं. मेटाफेज में you can see all of them are aligned at the equatorial plane. Simplest one to identify. Anaphase में the centromere divides because the contraction of spindle fibers takes place. So you will see over here the spindle fibers. This is the spindle fiber. This is the spindle fiber. It will divide like this. So you will see V-shaped chromosomes or L-shaped chromosomes or I-shaped chromosomes or J-shaped chromosomes. The shape will depend on the position of the centromere, but we don't have that, so we need not worry. But the identification feature you can see. यहाँ पे अगर आपको डाउट है क्रोमोसोम नंबर क्या है तो दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 1. सो यहाँ पे ऑल्सो द क्रोमोसोम नंबर इज 4 ओनली, बट देयर आर 8 chromatids which are present. So if you were seeing 4 chromosomes, 8 chromatids. Then anaphase in animal cell, plant and telophase. टीलोफेस में यू कैन से, अच्छा कुछ लोगों को टीलोफेस एंड प्रोफेस में प्रॉब्लम होता है. तो प्रोफेस, क्योंकि कभी कभी यहाँ टीलोफेस में भी ऐसा दिखाते हैं, बट टीलोफेस में आपको 2 सेल्स दिखेगा, प्रोफेस में एक ही दिखेगा ना. अगर ये सेम चीज प्रोफेस होता और डिसअपियरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता तो यहाँ पे एक ही सेल दिखता और एक ही न्यूक्लियस दिखता, बट टीलोफेस में आपको 2 दिखेंगे. सो इट विल बी इजियर टू डिस्टिंग्विश. साइटोकाइनेसिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू कैसे होता है. प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन से होता है, एनिमल सेल में फरो फॉर्मेशन से होता है. जैसे ये वाला डायग्राम, ऑल दीज आर बोर्ड क्वेश्चंस. ये वाला डायग्राम एनाफेस में है तो यू कैन सी वी शेप्ड क्रोमोसोम्स. ये आइडेंटिफिकेशन फीचर हो जाएगा आपका. अगर आपको फाइंड करना है यस अगर आपको फाइंड करना है कि क्रोमोसोम नंबर, अगर आपको फाइंड करना है कि इसका क्रोमोसोम नंबर क्या है तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 1, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 1, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 1, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 1. तो 4 ही है, 8 क्रोमैटिड है. अच्छा हैप्लॉइड डिप्लॉइड वाला, एक मिनट बेटा, हैप्लॉइड डिप्लॉइड वाला आपके पास 46 क्रोमोसोम्स है, 46 के 23 पेयर्स हैं. अगर हर एक पेयर में 2 है, अगर हर एक पेयर में 2 है तो वो डिप्लॉइड है. हर एक पेयर में अगर 2 है तो इट इज डिप्लॉइड. डिप्लॉइड मतलब 2n इज इक्वल टू 46. अगर हर एक पेयर में खाली 1 है तो n इज इक्वल टू 23. 23 is half the number of chromosomes. 46 is full complement of chromosomes. Okay, listening please ask. Sir, but in anaphase individually, each of chromatid is itself a chromosome, right? When we merge them, in that telophase. is a duplicated telophase. Okay. हाँ, in telophase. जैसे ये यहाँ पे 4, अब जैसे यहाँ पे ये देखो
क्रोमोसोम नंबर पूछेगा तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 एक साइड पे और 6 दूसरे साइड पे, 6 क्रोमैटिड एक साइड पे, यू कैन सी यहाँ पे 6 क्रोमैटिड एक साइड पे, 6 क्रोमैटिड दूसरे साइड पे। ओके Okay. Yes, sir. ये Sir, हो गया आपका यस एनाफेस एंड टेलोफेस। sir, if the question is that how many chromosomes are present in human embryo, then answer can be 46 also, na? How many chromosomes are present in human embryo? The answer is 46. Sir, आपके पेपर में 23 pairs करेक्ट दिया आपने। हाँ तो 23 pairs is 46 ना? हाँ बट मैंने 46 किया तो आपने 46 तो रहेगा रॉन्ग उसका दिया है। ऑल्टरनेट आंसर, सोल्यूशन की चेक करो बेटा, अगर ओके सर। सोल्यूशन की नहीं मिले तो पूछो, ठीक है? किसी किसी क्वेश्चंस के डबल आंसर्स थे। ओके ये हो गया टेलोफेस। अभी ये वाला देखो प्रोफेस है, यू कैन सी द डिसअपियरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये रहा डिसअपियरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड यू कैन सी द सेंट्रियोल एंड द एस्टर, मतलब एनिमल सेल है, एनिमल सेल में प्रोफेस है। फिर पूछा था ग्रोथ ऑफ शूट के लिए कौन सा सेल डिवीजन, तो माइटोसिस। पोलन ग्रेन फॉर्मेशन के लिए कौन सा सेल डिवीजन, तो मियोसिस। सो दीज वर द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। जैसे ये भी देखो, ये रहा डिसअपियरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बट यहाँ पे सेंट्रोसोम सेंट्रियोल नहीं है, तो ये प्लांट सेल का प्रोफेस है। कितना क्रोमोसोम्स, 1 2 3 4 क्रोमोसोम्स। Then you move on to your cell cycle. तो cell cycle is like your life cycle basically. Growth भी है और division भी। So when you include all the event, जैसे ये G1 phase, S phase and G2 phase, ये इतना खाली ये इंटरफेस है, और इसमें ये सेल डिवीजन ऐड कर दिया तो ये सेल साइकिल है। इंटरफेस में 3 है, G1, S, G2, and to this when you add the entire process of cell division also, then that becomes cell cycle. That is why cell cycle ka definition says all the events involved in growth and multiplication of the cell, while interphase is nothing but between two successive cell divisions. G1 phase, G1 phase, S phase, G2 phase, जिसमें से S phase का question आता है, S phase में DNA duplication होता है। That's your idea of cell cycle. See, cell cycle is cell division along with cell growth. So cell growth is interphase, cell division is K plus C, karyokinesis and cytokinesis. अच्छा, इसमें some of you had this problem कि RNA and proteins कहाँ synthesize होता है, so don't worry, they will give you specific options where you can distinguish. If there are overlapping options, you will get the mark. So normally you have G1 phase, S phase, G2 phase. G1, S, G2 को साथ में interphase बोलते हैं, followed by pro-meta anatelo. Pro-meta anatelo को साथ में karyokinesis बोलते हैं, followed by cytokinesis as the logical sequence. G1 phase में सेल प्रोड्यूस होता है, इट हैपेंस जस्ट आफ्टर माइटोसिस। सेल का साइज बढ़ता है, साइटोप्लाज्म बढ़ता है, RNA and proteins are synthesized, and mitochondria and chloroplasts which have their own DNA, they will duplicate. S phase में DNA duplicates, G2 phase में भी RNA and proteins बनता है which are required for next cell division. G1 phase के बाद the cell may either withdraw from the cell cycle, enter into the R phase, or the cell may continue into the cell cycle. ये सिंथेसिस फेस वाला आइडिया है, डीएनए डबल होता है इन दी एस फेस। देन मियोसिस, मियोसिस 1 मियोसिस 2 का कॉन्सेप्ट है नहीं, बट यू शुड नो कि मियोसिस 2 स्टेप्स का होता है। मियोसिस 1 इज रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस 2 इज द सेम एज माइटोसिस। नहीं समझ में आता है तो मियोसिस का लास्ट वाला देखने का कि एक मियोटिक डिवीजन से 4 डॉटर सेल बनता है जिनका क्रोमोसोम नंबर इज हाफ एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल, और ये गेमीट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। क्रॉसिंग ओवर में होमोलोगस क्रोमोसोम्स का डेफिनेशन सैंपल पेपर में था, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम साइज शेप, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर कायस्मा, कायस्मेटा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक सेगमेंट्स और क्रोमैटिन सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है या फिर वेरिएशन होता है, दैट वी हैड सीन। फिर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम को ओपन किया तो क्रोमैटिड मिलता है, क्रोमैटिड को ओपन किया तो क्रोमैटिन फाइबर मिलता है, एंड अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ द क्रोमैटिन फाइबर देयर आर बीड लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम्स। ये जो न्यूक्लियोसोम होता है, इट हैज अ कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स लाइक दिस इज कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स 5 6 7 8 on which a DNA strand wraps around. So nucleosome is basically a complex of 8 histone proteins on which a DNA strand will wrap around. जब उसको ओपन करेंगे, सो हिस्टोन्स आर बेसिकली द प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन पैकेजिंग ऑफ डीएनए। जब उसको ओपन करेंगे तो यू विल सी द डीएनए। जब डीएनए देखेंगे तो डीएनए का 2 स्ट्रैंड होता है, एक वर्टिकल लाइन, एक स्ट्रैंड होता है,
It is a double helix which is coiled around a central imaginary axis. The repeating component of DNA is nucleotide. एक साइड पे सीधा अरेंज्ड है, दूसरे साइड पे उल्टा अरेंज्ड है. They are parallel in opposite directions. The nucleotide is made up of base sugar phosphate. Base कैसा है? Nitrogenous. Sugar कैसा है? Since it is DNA, it is deoxyribose. The name of the sugar is deoxyribose. It has 5 carbons, so it is pentose sugar. Phosphate हमेशा बाहर की तरफ attached है, nitrogenous base अंदर की तरफ attached है. So nucleotide, which is the repeating DNA component, is made up of, or it's a complex made up of phosphate, sugar, and nitrogenous base. Phosphate, sugar, nitrogenous base. Phosphate, sugar, nitrogenous base. Nitrogenous base is 4 types: adenine, guanine, cytosine and thiamine. एक साइड पे अगर एडिनाइन है तो दूसरे पे थायामाइन होगा, आया था. अगर दूसरे साइड पे गुएनाइन है तो यहाँ पे साइटोसाइन हो गया, चला गया. A with T is double hydrogen bond and G with C is triple hydrogen bond. आया था, चला गया. यहाँ पे ये भी अटैच्ड होता है, एक फॉस्फेट ऊपर वाले शुगर को अटैच्ड होता है. दिस फॉर्म्स द बैकबोन, एंड जो रंग्स ऑफ द लैडर है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है along with the nitrogenous bases that are present. फिर जीन का डेफिनेशन. Genes are sequences on the chromosome. They code for proteins, and these proteins express as a feature of the body. Okay, so this was your concept of cell division.